Hello my viewers, I'm your host Gurinder Singh and today I am here with a very interesting video regarding Ielts reading, particularly true, false and not given. Numerous of children are having doubt in this kind of section of reading because they are not able to analyze that whether the answer will be true or not given or false or not given. So in this video we are going to start with a practice session. And this video is not a session of tips and tricks, it's just a simple method. Okay, we will go with just a simple method that how we can find a correct answer by just matching the meaning. Okay, so now let's start with first question. So viewers, here the question is, city transport developed slower than other means of communication. City transport developed slower than other means of communication. This is the passage, this is the location, because students normally get the location easily, but after that they mark the wrong answer. So here we are going to see that how we can analyze the correct answer. The question is, city transport developed slower than other means of communication. Here we have to mark the keywords, and keyword over here is city transport developed slower. जो city transport है वो slow develop हुई है. ठीक है, स्लो डेवलप हुई है. किससे स्लो डेवलप हुई है? देन अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. इट्स अ फॉर्म ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू. ठीक है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ये देन देखते सार ही नॉट गिवन लगा देते हैं. गाइस, दैट्स अ गुड ट्रिक, बट 70% इट वर्क्स, नॉट एट ऑल 100%. ठीक है, कहीं ऐसा नहीं है कि हर बार ही देन का आंसर नॉट गिवन होगा. नाउ लेट्स सी इसमें नॉट गिवन है, ट्रू है या फॉल्स है. लेट्स सी दैट. यहाँ पे जो पैसेज है दैट इज, we can even send probes to other planets, but when it comes to getting around our cities, we depend on systems that have scarcely changed since the days of Gottlieb Daimler. Okay, यहाँ पे क्या हो सकता है? What can be the answer? Just pause the video and look at it. What can the answer be? Okay, now let's see the answer. What's the answer is? यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो सिटी ट्रांसपोर्ट है वो स्लो डेवलप हुई है देन कम्युनिकेशन. ठीक है, यहाँ पे भी वो सेम चीज़ ही कह रहे हैं, because we can even send probes to other planets. वो कह रहे हैं कि हम probes और planets में भेज सकते हैं. But when it comes to getting around our cities, जब हमें अपनी सिटी में घूमना होता है, we depend on system that have scarcely changed. Scarcely मतलब क्या होता है? Scarcely, what's the meaning of scarcely? Scarcely means जो बहुत कम क्वांटिटी में, जो बहुत स्लो चेंज होता है उसको कहते हैं scarcely. बहुत स्लो चेंज है जो. Changed since the days of Gottlieb Daimler. Gottlieb Daimler क्या है? ये उन्होंने एक ट्रिक यूज़ किया है क्योंकि ये एक पुराना इंजीनियर है जो बहुत आई गेस 19 और 18 का इंजीनियर है. उस समय के बाद ये कह रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ज़्यादा चेंज नहीं हुई. सो इसीलिए आंसर इज ट्रू. या द आंसर ओवर हियर इज ट्रू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. Now viewers, second question is, the pollution caused by city transport has been largely ignored. They are saying that the pollution caused हुआ है because of transport, उसको ignore किया गया है. Now let's see the passage, what the passage says. Passage here says that in recent years, the pollution belched by millions of vehicles has dominated the debate about transport. Now what can the answer be? Just look at the passage and try to get the answer. Okay, now here the question answer can be, ये कह रहे हैं कि इन्होंने इग्नोर कर दिया, but they are saying that इस चीज़ पे डिबेट होने लगी है. इतना ज़्यादा इशू हो गया that it has caused the debate. So the answer is false. It is contradicting. Yeah. इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग. ये कह रहे हैं कि इग्नोर कर दिया गया, ये कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है कि उस पर डिबेट होने लगी है ऑन ट्रांसपोर्ट. ठीक है, सो दैट्स व्हाई द आंसर ओवर हियर इज फॉल्स. नाउ गेट इट गाइस. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कीवर्ड्स मैच करके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, बट दैट इज रॉन्ग.
To match the keywords is just to find out the location. After that you have to match the meaning. Okay, आपने meaning उसका match करना है. जब आपको location मिल गई उसके बाद जो question का meaning है और जो passage हमें कह रहा है उसका meaning हमने match करना है. If that contradicts then the answer is false, and if that matches then the answer is true. If there would be no information then the answer could be not given. So now third question over here is, public transport is particularly difficult to use on steep hills. Public transport is difficult to use on steep hills, and the passage says that, and persuading people to use trains and buses will always be an uphill struggle. So what can be the answer? Just look at it once, pause the video and try to get the correct answer. Okay, now I guess most of the students must have written the answer that is true. Public transport is particularly difficult to use on steep hills. Okay, how many students have guessed the answer is true? That comment to me. And but the answer is not given. Yes, the answer is not given. Guys, यहाँ पे क्वेश्चन है कि public transport is particularly difficult to use on steep hills. ये कह रहे हैं कि जो public transport है वो difficult है use करना on steep hills. बट यहाँ पे वो कह रहे हैं, पैसेज जो है वो कह रहा है कि एंड परसुएडिंग पीपल टू यूज ट्रेन्स, उनको उत्साहित करना कि वो ट्रेन्स या बसेस यूज करें, विल ऑलवेज बी एन अपहिल स्ट्रगल. अपहिल, यहाँ पे अपहिल जाने की बात नहीं हो रही है, ये कह रहे हैं कि अपहिल स्ट्रगल है. दिस वर्ड इज कनेक्टेड विद स्ट्रगल. कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो कहीं पे डिफिकल्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, कोई मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों को इसके तरफ लाना एक अपहिल स्ट्रगल है. सो दैट्स व्हाई द आंसर इज नॉट गिवन. I guess the point is clear to you. If you will match the keywords, then the chances are more to get the wrong answer. Guys, getting it? This keyword matching trick is just to get the location, not the correct answer. Okay, now let's see one more. So viewers, now here the last question is, governments should impose compulsory restrictions on car use. Governments should impose compulsory restrictions. यहाँ पे keyword क्या है? कंपल्सरी रेस्ट्रिक्शंस. किस चीज पे? ऑन कार यूज. कार यूज पे कंपल्सरी रेस्ट्रिक्शंस. जो पैसेज है, पैसेज क्या कह रहा है? पैसेज यहाँ पे कह रहा है, सो politicians should be trying to lure people out of their cars, not forcing them out. There is certainly no shortage of alternatives. Guess the answer. What can the answer be? Okay, yes, I guess that this one was really easy and most of the students must have got the correct answer, because यहाँ पे वो कह रहे हैं कि compulsory restrictions करनी चाहिए, but यहाँ पे वो कह रहे हैं not forcing them out of their cars. Not forcing them. lure करना यहाँ पे होता है attract करना. ठीक है, politicians जो है उनको try करना चाहिए कि लोगों को attract करें out of their cars. ठीक है, उनको कार से बाहर निकालने के लिए अट्रैक्ट करें, कि किसी और चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करें. नॉट फोर्सिंग देम आउट, रेस्ट्रिक्शंस ना लगाएं. ठीक है, सो द आंसर इज ट्रू. So guys, here I end up with this video. I hope that it will be beneficial for you. If yes, don't forget to smash the like button and comment below that how many correct answers did you got.